Dr. Dinesh Kumar, lecturer physics, Government Victoria Girls Senior Secondary School, Patiala. बेटे जिहड़ा अज आपां प्रैक्टिकल करन लगे हां उहदा एम है टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर of known resistance and figure of merit into an ammeter of desired range and verify the same. ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੈਲਵਾਨੋਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਓਸਟੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਵੇ ਕੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ as given for conversion of the same range, कनैक्टिंग वायर्स चाहिए ने, स्क्रू गॉज चाहिए है, सैंड पेपर चाहिए है, जिन्ना भी ये मटीरियल चाहिए है ये सब इस करके भी चाहिए है क्योंकि सानू अपने ऑपरेटर्स की जी नहीं पता, कैपिटल जी कढ़नी पएगी यानी कि रजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कढ़नी पएगी, फिगर ऑफ मैरिट कढ़नी पएगी, फिर असीं गैल्वेनोमीटर नू एमीटर च कन्वर्ट कर पावांगे। तो अपने सैटअप दे विच दो रजिस्टेंस बॉक्स असीं जिहड़े यूज़ कीते ने ऑफ हाई रजिस्टेंस, ये उन्हां दीयां फिगर है, दिस इज फिगर नंबर 1 नंबर 2। तीसरी गल जी यूज़ की है वह है बैटरी एलिमिनेटर यूज़ किया अपने सर्किट जी रेंज है अप टू 12 वोल्ट है, शोन इन दी फिगर नंबर 3। चौथी चीज़ जी अपने अपने सर्किट यूज़ की है वह है रियोस्टैट। सर्किट दे विच गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है। गैल्वेनोमीटर की करता है, इट मेजर्स एंड डिटेक्ट्स स्मॉल इलैक्ट्रिक करंट, ये मिली एंपीयर और माइक्रो एंपीयर की रेंज होता है। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द इलैक्ट्रिक करंट। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और जी रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। सर्किट दे विच जिहड़ा वोल्टमीटर यूज किया है वो 0 to 5 वोल्ट की रेंज है और रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इट शुड बी इनफिनिटी। Voltmeter is used to measure the potential difference in an appliance. It is always connected in parallel with the appliance. Now, conversion of galvanometer into ammeter. देखो, IG जेड़ा है that is the maximum current for galvanometer which gives full scale deflection. अगर आई करंट सर्किट च जा रहा है तो आई जी करंट है जिहड़ा वो गैल्वेनोमीटर चों पास हो रहा है, आई माइनस आई जी करंट है जिहड़ा वो शंट चों पास हो रहा है और गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंटिंग इट विद ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड द शंट आर इक्वल। हुण वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर होगी आई जी जी एंड द वोल्टेज अक्रॉस शंट होगी आई माइनस आई जी इंटू एस। दोनों आप इक्वेट कर लिया तो यह बन जूगा एस इज इक्वल टू आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी। नाउ वी हैव टू इफ वी वांट टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर, हुण सर्किट दे विच जे आई करंट आई जी जिहड़ा करंट है वो गैल्वेनोमीटर चों ही पास हो रहा है और उहदे नाल सीरीज दे विच एक हाई रजिस्टेंस लगी हुई है उहदे चों ही पास हो रही है। तो साडे कोल जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई जी इंटू आर प्लस जी हो जाऊगा। The potential difference across the given load resistance is the sum of the potential difference across the galvanometer and the potential difference across the high resistance, that is V is equal to Ig R into R plus G. So V upon Ig minus capital G is equal to capital R. In this way we can convert galvanometer into voltmeter. Now differences between ammeter and voltmeter. Ammeter low resistance, voltmeter high resistance और resistance जिहड़ी है ammeter दे केस दे विच वो GS over G plus S होएगी और वोल्टमीटर के केस दे विच G प्लस आर होएगी। शंट की जिहड़ी वैल्यू है वो एमीटर के केस दे विच आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी होएगी और एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉल और सीरीज दे रेजिस्टेंस is V upon Ig minus G and that is having a very high value. And in the case of ammeter it is always connected in series. In the case of voltmeter it is always connected in parallel. Ammeter the case resistance of an ideal ammeter is 0. Voltmeter the case resistance of an ideal voltmeter is infinity. Ammeter the case
its resistance is less than that of galvanometer, or voltmeter ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ its resistance is greater than that of the galvanometer, or ammeter ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ it is not possible to decrease the range of the given ammeter. Voltmeter ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ it is possible to decrease the range of the given voltmeter. Now, to calculate figure of merit and also to calculate the value of the capital G, that is the resistance of the galvanometer, this is the circuit diagram in which positive end of the battery is connected to the resistance box R, and one end of the other end of the resistance box is connected with the galvanometer as well as with resistance box S, and one end of the S is connected with the key, and the other end of the key is connected with the galvanometer as well as with the key K1, and the other end of the key K1 is connected with the negative end of the battery. One-way key, resistance box S and resistance box R, galvanometer, key K1, power supply. Connect the positive of the galvanometer with resistance box S. One end of the resistance box R is connected with the other end of the resistance box S, and from resistance box S to one-way key K2, and the other end of the key K2 is connected with the negative of the galvanometer, and from negative of the galvanometer to key K1, and the other end of the key K1 is connected with the negative of the power supply. Whereas positive of the power supply connected with the resistance box R. All connections must be tight all the connections, and all connections must be neat. Insert the key K1. Introduce a high resistance capital R from the resistance box. Adjust the value of R in such a way that the galvanometer gives full scale deflection. See now, the galvanometer is giving full scale deflection
theta equal to 30. 5,000 plus 2,000 7,000 plus 500 7,500 plus 200 7,700. So R is 7,700, theta is 30. Now insert the key K2. See, galvanometer is giving zero deflection. Keeping R fixed, adjust the value of S so that the deflection is half of the previous value. Now deflection is at 15 degree and S is 80. Use the formula G equal to RS over R minus S. G comes out to be 80 ohm approximately. Second reading. Now deflection 5,000, 2,000, 7,000, 8,000, 8,200. Theta is 28 degree and galvanometer deflection C, it is now at 14 degree and S is again 80, 28, 14, S is 80. Use the formula G equal to RS over R minus S. G equal to 80 ohm approximately. Now third reading. This is now at 26 degree. 5,000 plus 2,000, 7,000 plus 1,000, 8,000, 8,500, 8,700, 8,800. Now R is 8,800. Theta is 26 degree. Now insert the key K2. See, the galvanometer deflection is now at 13 degree. S is again 50 plus 20 plus 10, 80 ohm. Use the formula G equal to RS over R minus S. G is again 80 ohm. Take the mean value of G. Mean G is equal to 80 plus 80 plus 80 divided by 3. Answer is 80 ohm. Now measure the EMF of the battery using voltmeter. The EMF comes out to be 4.9 volt. Now EMF of the battery is 4.9 volt. R plus G 7,780 ohm. Deflection theta equal to 30. Use the formula to calculate figure of merit, that is K is equal to E upon R plus G into theta. It comes out to be 2.056 into 10 the power minus 5 ampere per division. Repeat similar calculation for 8280 ohm and 8880 ohm. The mean value of K comes out to be 2.068 into 10 the power minus 5 ampere per division. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂ ਗੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 0.01 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਔਰ 0.001 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 0 ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਕੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 25 ਹੈ।
तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊंट है करिए मेन स्केल जो 0 सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 0 प्लस 25 इंटू 0.001 ਤੇ आ गया 0.025 सेंटीमीटर। एक रीडिंग होर ले लैने इसकी ब्रैकेट के नाल इनू थोड़ा जा सैट कर लिए। अगेन सर्कुलर स्केल की रीडिंग हैगी है जी वो 25 है तो साडा जो डायामीटर है वही 0.025 सेंटीमीटर बनेगा। एक रीडिंग होर ले लैने मेन स्केल तो 0 ते ही है सर्कुलर स्केल साडी 25 ते है तो इस केस भी जो डायामीटर हैगा वो 0.025 सेंटीमीटर। वी हैव just determined the diameter of the copper wire using screw gauge and this is 0.025 centimeter. Now we will calculate the area and that is given by pi d square upon 4. Pi is 3.142, d is 0.025, the square divided by 4. The answer is 4.9 into 10 to the power minus 8 meter square. Now the specific resistance of the copper is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਾਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ IG ਹੈਗਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 30 ਸੀਗੀ ਥੀਟਾ 30 ਸੀਗਾ IG NK N ਹੈਗਾ 30 ਠੀਕ ਹੈ K ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 2.068 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0.0006204 एम्पीयर। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਐम्पीयर ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ S ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ IgG upon I minus IG। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ IG ਹੈਗੀ ਹੈ 0.0006204 ਤੇ G ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ G ਉਹ ਹੈਗੀ 80 ਤੇ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਹੈ ਤੇ IG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0.0006204 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 0.035 ओम। पर जे तुसी कॉपर वायर की रजिस्टेंस देखो R इक्वल टू रो L बटा A करके और लेंथ 1 मीटर लो रजिस्टिविटी आपने देखी है 1.72 इंटू 10 दी पावर -8 ओम मीटर। एरिया आपने कैलकुलेट किया 4.9 इंटू 10 दी पावर -8 मीटर स्क्वायर। तो जब तुसी सॉल्व करोगे बन जूगा 0.35 पर सानू तो शंट की वैल्यू बड़ी स्मॉल चाहिए है 0.03 पर आ रही है 0.35। तो असी की कीता 10 कॉपर दी वायरां लैके उन्होंने पैरल चला लिया। पैरल चलाने के कारण जो हम असं पैरल चला लिया तो जी शंट बन जाएगी वो R/N यानी कि 0.35 डिवाइडेड बाय 10 ये बन जूगी 0.035 ओम विच इज नियरली इक्वल टू 0.03 ओम। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 30 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1.5 ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1.5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 30 ਇਹ ਆ ਗਈ 0.05 ਐਂਪੀਅਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਉਹ 50 ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕੱਢੋ ਤਾਂ 1.5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 50 ਇਹ ਆਊਗਾ 0.03 ਐਂਪੀਅਰ। और इसे जी मैंने ये दिखाया है निचली डायग्राम च भी किस तरह मैंने 10 वायरां इकट्ठियां करके जिहड़ी हैगी है ਉਹ पैरल चलाइयां ने 10 वायरां कॉपर दियां नूं इकट्ठा कीता। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੇ ਮੂਵੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮੂਵੇਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। बैटरी एलिमिनेटर एमीटर गैल्वेनोमीटर रियोस्टैट
one-way key, and this is shunt prepared by combining 10 copper wires in parallel. Now connect the positive of the battery with the positive of the ammeter. Negative of the ammeter is connected with the positive of the galvanometer. Negative of the galvanometer is connected with the movable end of the rheostat. Fixed end of the rheostat is connected with the one-way key. And the other end of the one-way key is connected with the negative of the battery eliminator. Now connect the shunt in parallel with the galvanometer. Insert the key. Adjust the variable resistance. .5 ampere current, and the galvanometer is giving full scale deflection, that is theta is 30. Now when number of divisions here are 23 and current is 1.15, and when number of divisions are 5, the current is 0.15. In this way you can take any number of readings. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ 3 into 0.05 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0.15। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0.15। ਐਮਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ 0.15 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 23 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 0.05 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1.15 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ 1.15 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 30 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 1.5 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 30 ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0.05 ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। Some MCQ questions for Viva. The coil of a sensitive moving coil galvanometer swings too far on both sides. The movement can be quickly stopped by A. Connecting a large distance across the ends on the coil. B. Holding a magnet near the coil. C. Connecting a short
length of copper wire across the ends of the coil. D. Earthing the case of galvanometer. The correct answer is C. Connecting a short length of copper wire across the ends of the coil. Second question. To increase the sensitiveness of a moving coil galvanometer, one may A. Decrease the number of turns in the coil. B. Decrease the area of the coil. C. Increase the area of the coil. D. Increase the strength of the current. Now, we know C theta is equal to NBIA. Theta beta I equal to NBA upon C. So if you increase the area, then the current sensitivity will increase. So the correct answer is C. Third question. The resistance of an ideal ammeter is low, 0, high, infinite. Answer is B. Resistance of an ideal ammeter is 0. An ammeter should have very low resistance. A. For large deflection. B. For better stability. C. So that it may not burn out. D. So that it may not change the value of the current by its presence. The correct answer is D. That it may not change the value of the current by its presence. Fifth question. A voltmeter always gives lower value of potential difference because A. Some energy is lost in moving the needle. B. Internal resistance of the cell plays the main role. C. It absorbs some energy. D. Both A and B are correct. Now, in this case, D answer is the correct because some energy is lost in the moving the needle, and the internal resistance of the cell also plays the main role. Question number 6. Which of the following statement is correct? A. An ammeter is a low resistance galvanometer and is always connected in parallel with the circuit. B. An ammeter is a low resistance galvanometer and is always connected in series in the circuit. C. An ammeter is a high resistance galvanometer and is connected in series with the circuit. D. An ammeter is a high resistance galvanometer and is always connected in parallel in the circuit. The correct answer is B. An ammeter is a low resistance galvanometer and always connected in series in the circuit. बेटे मैंने उम्मीद है कि थोनू अज दा जिहड़ा प्रैक्टिकल है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बहुत अच्छा लग्या होना है। थैंक यू।